Let me share this screen. I'm audible and is my screen visible to you? जी आप कोई ऑडिएबल कंफर्म? है राकिब सर, आपकी स्क्रीन भी विजिबल है। Thank you so much. Thank you so much. So, Assalamu alaikum, everyone. So, I welcome everyone to this orientation session, which is on the ultimate Quranic mathematics. So, we'll try to explore some fascinating relationship between Islam and mathematics, well, the two realms that may seem separate but are deeply connected. So, yeah, I would love if this session is interactive. So, everybody is welcome to interact, ask questions in between. या जितना हम ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम समझेंगे चीज़ों को और जितनी बात होती रहेगी थ्रू आउट द सेशन तो बेहतर रहेगा हमारे लिए भी, हम समझ भी अच्छे से पाएंगे और इसका पर्पस भी सर्व होगा। एंड और इस जहाँ पे हम वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर बेसिकली द डीप कनेक्शन बिटवीन इस्लाम एंड मैथमेटिक्स एंड कुरान एज द डिवाइन वर्ड ऑफ अल्लाह, how it contains within it the structure patterns that are mathematically intriguing. And at the same time we'll look at the Islamic scholars also, जो इस्लामिक स्कॉलर बहुत सारे मुसलमान स्कॉलर्स आए हैं उनने कैसे कंट्रीब्यूट किया है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और उन्होंने किस लेंस के थ्रू देखा है, उन्होंने जब कुरान पढ़ा है तो उन्होंने किस लेंस के थ्रू पढ़ा है, तो उन्होंने क्या वैल्यूएबल इनपुट्स अपने दिए हुए हैं और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है टू द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। इन दिस सेशन इंशाल्लाह आगे हम एक बार हम देखेंगे आगे कि हाउ द क्लेरिक्स जो एक हमें आएंगे आगे, मालिकी फिक के एक फेमस क्लेरिक, उनका कंट्रीब्यूशन भी मैथमेटिक्स में रहा है। सो इट हैज बीन द लर्न स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स और टू द फील्ड ऑफ साइंस। So this session is all about understanding those connections and appreciating the beauty of this of divine precision and seeing how faith and knowledge can go hand in hand. So both the जिसको हम बोलेंगे कि एक दीनी तालीम और दुनिया की तालीम, how they are interrelated and how we should pursue it. So let's go on with it now. So let's start with something basic you might have come across. You may already be knowing of this. आपको शायद इस बारे में पता भी होगी। वर्ड बैलेंस एक चीज होती है इन कुरान, इसको डिफरेंट नामों से भी बोला जाता है, डिफरेंट ऑथर्स इसको डिफरेंट नामों से पुकारते हैं। इंटरेस्टिंग पैटर्न्स विद द नंबर 19, इसको भी आप डिफरेंट नामों से जानेंगे, बट देयर इज अ पैटर्न रिलेटेड टू 19। या ऐसी और एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि बैलेंस ऑफ चैप्टर वर्स मैट्रिक्स, इसको आप देखेंगे डिफरेंट बुक्स में भी डिस्कस किया गया है, डिफरेंट नामों से डिस्कस किया गया है, बट मीनिंग एट द एंड ऑफ द डे सेम है, जार्गन्स डिफरेंट यूज किए गए हैं। So we will try to understand इस सेशन में कि our focus will be mainly on discovering these deep links between Islam and mathematics. या एक कुरान में अगर हम कोई फीचर देख रहे हैं, something we see which is intriguing, something ये क्यों ऐसे हो रहा है, तो we will try to understand it. But यहाँ पे हमारा जो टूल होगा वो मैथमेटिक्स होगा। सिमिलरली जो कि हमारा 19 नंबर है, we will see what is there something special about it. आपने भी शायद you may not be knowing the concept behind this number 19, but आपने most probably सुना तो होगा। So if you have not, we will be introduced to this new concept today. So this mathematics also, it's not just about numbers, it's also about these patterns, logic, और जो structure एक बनता है हमारे साथ। So I would really encourage any of you, अगर किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है किसी चीज के बारे में, so that we have an idea कि हमारे पास जो ऑडियंस है तो उनको उनके पास कितना आइडिया है इस चीज के बारे में। आई वुड रियली अप्रिशिएट somebody to go up, raise a hand, or maybe just say if they know anything about one of these things. Do we have anyone who is ready to just put up their hand? And yeah, well, let's get going with it. Let's see how we let's take up the first concept of it, word balance in the Quran. So क्या बोलता है हमें word balance in the Quran? अगर आप literal meaning से ही देखें कि there is balance of the words, एक तराजू पे देखेंगे there is balance in the words. For example, let's try to understand this with an example. कुरान में अगर हम देखेंगे angels and devils, फरिश्ते और जो devils है, इनको equal number of times
they have been mentioned. Angels, they have been mentioned 88 number of times. Devils, they have been mentioned 88 number of times. Look, imagine this. ये एक divine book है. So we do, Muslims, everyone does consider it as a divine book. It is a divine book. Does anybody want to say anything? Yeah. So ये देखते हैं हम कि ये जो opposites है, ये equal number of times mention किए गए हैं इसमें. हम देखते हैं कि एक बार नहीं हो रहा है, दूसरी बार हम देखेंगे. We discuss about the hereafter. That is mentioned 115 times. और फिर हम देखते हैं इस दुनिया के बारे में जब बात होती है, that's also mentioned 115 times. Then we see paradise. It's mentioned 77 times. Hell, which is quite opposite to paradise. It's also mentioned 77 number of times. The exact same number of times. ऐसे ही हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं विच आर क्वाइट ऑपोजिट, बट हम देखते हैं न्यूमेरिकली जब उनका बैलेंस हम कुरान में देखते हैं दैट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट, दैट्स एग्जैक्टली द सेम. एंजल्स का जिक्र 88 बार, डेविल्स का जिक्र 88 बार. देयर माइट बी डिफरेंट और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ऑपोजिट्स है, बट दे आर बीइंग मेंशन्ड एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स. सो दैट शोज देयर इज अ पैटर्न टू इट. ये हमें एक पैटर्न दिखाता है कुरान शरीफ में. 1400 years बैक, 1400 साल पहले से पहले भी जो किताब आई है उसमें किसने ये पैटर्न दिया है कि ऑपोजिट इक्वल नंबर बार आ रहे हैं. एंड इट्स नॉट लाइक कि वो बस इक्वल टाइम्स आ रहे हैं, वो इक्वल टाइम्स आ रहे हैं और जब दे कंप्लीट द मीनिंग. अगर एक टाइम भी कोई कम हो रहा है तो कंप्लीट मीनिंग तो नहीं है, देयर इज समथिंग मिसिंग इन इट. बट व्हेन दे कम इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, एक भी 88 टाइम्स बार आएगा एंजल, 88 टाइम्स बार डेविल भी आएगा. सो देयर कम्स अप एक ऐसा मीनिंग निकालता है कंस्ट्रक्टिव विच इज कंप्लीट. सो वी सी दिस ब्यूटीफुल वर्ड बैलेंस इन द कुरान, राइट? I would really appreciate if somebody says, are we together on this? Are we understanding this? क्या हम ये समझ रहे हैं कि ये वर्ड बैलेंस क्या है? Just a yes would be really appreciated from somebody. Okay, cool. So we go ahead with it. हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा इसी के साथ. वेल, वी नीड टू फर्स्ट ऑफ रियली अप्रिशिएट दिस कॉन्सेप्ट. इट शुड एटलीस्ट फैसिनेट अस कि देयर इज अ बैलेंस ऑफ वर्ड्स इन द कुरान. जो ऑपोजिट्स है उनका ही बैलेंस किया जा रहा है. 1400 years बैक एक किताब आ गई है जो परफेक्टली बैलेंस न्यूमेरिकली ऑपोजिट वर्ड्स को हमें दे रही है. एंड इट फैसिनेट्स कैसे किया गया है ये, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट रैंडम नंबर्स इक्वल आ रहे हैं, इट्स द ऑपोजिट जो इक्वल आ रहे हैं. एक तो वो इक्वल आ रहे हैं और वो कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं हमें. हाउ इज इट पॉसिबल? और अंडरस्टैंड दिस, ये चीज हो रही है एंड 1400 साल पहले वी डिड नॉट नो अबाउट इट. दिस वाज या. Sir, voice is not clear, please. We are not getting properly. अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? जी सर, क्लियर नहीं आ रही है और वॉल्यूम भी कम है थोड़ा. आप प्लीज थोड़ा क्लियरली नहीं आ रही है वॉइस. ठीक है, अभी साफ आ रही है? अभी साफ आ रही है आवाज? कोई अगर कंफर्म कर दे तो. जी आप थोड़ी. ठीक आ रही है, आप ठीक आ रही है. थैंक यू सो मच, थैंक यू. या 6 शायद इसमें ही था. हाँ. तो हम ये देख रहे हैं. इसके बाद जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा वो नंबर 19 का आएगा. नंबर 19 के बारे में मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारों ने सुना होगा. देयर आर डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस टू दिस नंबर 19. बहुत सारे इसको डिफरेंट प्रिज्म्स के थ्रू देखेंगे, लेकिन व्हाट वी विल डू इज कि हम इसको उस प्रिज्म के थ्रू देखेंगे विच इज द वाटर टाइप प्रिज्म. हम इसको उस कॉन्सेप्ट के थ्रू देखेंगे जो असली कॉन्सेप्ट इसका है. इसको लोग डिफरेंट तरीकों से एक्सप्लेन करते हैं. दे विल स्टार्ट बाय सेइंग कि बिस्मिल्लाह the first verse and it has 19 letters to it. This is also one explanation. There are several other explanations to this number 19 being unique, but we will come to the point which makes it the most unique. क्यों है ये यूनिक? हम देखते हैं 74th chapter of the Quran. It mentions that hell is overseen by 19 angels. जो the hell is overseen by 19 angels. Precisely यहाँ पे 19 कहा गया है. पहले हमें ये लगता है कि something being mentioned in the Quran, it must have some significance. अगर 19 बोला गया है, there must be some reason why it is 19, right? But it does not keep it there.
यहाँ पे बात खत्म नहीं हो रही है कि 19 बोल दिया तो बस नहीं। नेक्स्ट वर्स जो आ रही है इसके बाद, वर्स 31, वो एग्जैक्टली बोल रही है इस 19 के बारे में. व्हाट डज इट से अबाउट इट? एंड वी हैव मेड देयर नंबर only as a test for the disbelievers, so that the people we have made their number only as a test for the disbelievers, so that the people of the book will be certain and the believers will increase in the faith. So their number of the angels, which is 19, right? Only as a test for the disbelievers. So there is a significance to this number. पहली आयत में बोला जा रहा है कि 19 angels will oversee this help. But अगली आयत में बोला जा रहा है there is a significance to this 19. This number is as a test for the disbelievers, and it will increase the believers in the faith. So this number already became significant. इस नंबर का कुछ अलग ही मतलब है. इस 19 की कोई सिग्निफिकेंस है. हमें इसको डिफरेंट प्रिज्म से देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड इट. ये तो एक कुरानिक पर्सपेक्टिव रहेगा इस चीज का. इस्लामिक पर्सपेक्टिव बोलेंगे कि नंबर 19 की कुछ थोड़ी सी यूनिक सिग्निफिकेंस तो दिख ही रही है ना. अगर हमें एक कुरानिक सिग्निफिकेंस, एक इस्लामिक सिग्निफिकेंस नंबर 19 में दिख रही है, हमें अब इसमें देखना है कि व्हाट वी विल ट्राई टू सी एक मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस रहेगी क्या इसमें. वुड देयर बी एनी सिग्निफिकेंस अगर हम मैथमेटिकली देखें 19 को? वेल, नंबर ऑफ 19 को अगर हम देखें, 19 इज पहले ही एक प्राइम नंबर है. तो द नंबर ऑफ इसके the numbers that will be divisible by 19 is quite few than other numbers. It will not be like 2. Every second number is divisible by 2. So 50% of the numbers will be divisible by 2, right? अगर हम देखेंगे अब probability of a number which is divisible by 19, it would be 1 by 19, which is approximately 5%. Are you with me? How do we say this? जैसे हम बोलेंगे probability of a number being divisible by 2, right? It is 1 by 2, which is actually 50%. कोई भी random number आप ले लें. What is the probability of it being divisible by 2? It's 50%. It is 50%, right? Because every other number is an even number. एक odd, एक even हमें आ रहा है. तो वो numbers are divisible by 2, right? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. तो अगर ऐसी बात होती 2 नंबर की अगर हम सिग्निफिकेंस देख रहे होते तो हमें इसके बहुत सारे मल्टीपल्स मिलते, 2, 4, 6, 8, 10. तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी सिग्निफिकेंस हमें नहीं दिखती. लेकिन जब हम नंबर 19 की बात करते हैं, पहले ही तो ये एक प्राइम नंबर है. Somebody want to say? Sir, excuse हाँ me. जी. हेलो हाँ, यस प्लीज. सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हमें अंडरस्टैंड नहीं हो रहा. आवाज आ रही है ओके, लेकिन वो clear नहीं है. आई डोंट नो क्या मसला आ रहा है आवाज के साथ. आई होप आप साफ आ रही हो. जिसी टाइम पे ब्रेक होगी वॉइस आप प्लीज मुझे बोलिए, सो दैट आई नहीं एम नहीं, वॉइस एबल टू ब्रेक फिक्स नहीं हो इट. रही है. वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है, आ रही है लेकिन अंडरस्टैंडेबल नहीं है. ओके, इस वक्त अब क्लियर आ रही है. जी, अभी तो क्लियर आ रही है. ओके, सो अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ. नंबर 19 की सिग्निफिकेंस हम एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. पहली तो ये नंबर 19 जो है एक प्राइम नंबर है, राइट? सो वेरी फ्यू नंबर्स आर डिविजिबल विद इट. उसके बाद हम देखेंगे नंबर 19 के अगर हम देखेंगे रैंडम ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर बीइंग डिविजिबल बाय 19, व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट? कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 19, इट वुड बी 1 by 19 obviously, right? But let's try and understand it in simpler terms. Consider a number like 2. क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कोई रैंडम नंबर अगर हम लेंगे that it is divisible by 2? It's 50% because every other number is divisible by 2. आप लेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 6, 8, 10 ये numbers divisible by 2 रहेंगे. 9, 7, 5, 3 they will not be divisible by 2. But 50% of the numbers आपको मिलेंगे जो divisible by 2 होंगे, और 50% ऑफ द नंबर्स आपको मिलेंगे जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होंगे. सो द मल्टीपल्स ऑफ 2 आपको बहुत सारे मिलेंगे. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे करके आपको बहुत सारे मल्टीपल्स ऑफ 2 मिलेंगे. लेकिन 19 इज यूनिक इन अ सेंस. आपको मल्टीपल्स ऑफ 19 कम मिलेंगे.
द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ नंबर, अगर आप रैंडम नंबर ले रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको 1/19 आएगी rather than 1/2. 1/2 is 50%, right? लेकिन 1/19 it would amount to only 5%. तो अगर आप कोई रैंडम नंबर लेंगे and see it's divisible by 19, it would only be amount to 5%. लेकिन आप अगर दो रैंडम नंबर्स लेंगे, what is their probability कि दो रैंडम नंबर्स are divisible by 19? It would be 1/19, 1/19 and 1/19, and it will be like 0.2%. इसका मतलब कि बहुत कम चांसेस है अगर आप कोई दो रैंडम नंबर्स ले रहे हैं और वो डिविजिबल बाय 19 है, इट इज द चांसेस आर मिनिस्क्यूल, इट्स ओनली 0.2%. देन वी गो अहेड, हम बोलेंगे तीन नंबर्स में ले रहा हूँ, रैंडमली पिक कर रहा हूँ मैं, और मैं बोल रहा हूँ कि क्या वो डिविजिबल बाय 19 है. व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी वुड बी 0.01%. दैट इज वेरी मिनिस्क्यूल, राइट? बहुत कम परसेंटेज होगी अगर हम लेंगे एक रैंडम नंबर लेंगे विच इज डिविजिबल बाय 19. अगर हम लेंगे तीन नंबर, रैंडमली लेंगे हम तीन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 19, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज ओनली 0.01%. सो हम देख रहे हैं पहली मैथमेटिकली हम देख रहे हैं कि 19 इज अ यूनिक नंबर इन इटसेल्फ, इट्स अ प्राइम नंबर. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर बीइंग डिविजिबल बाय 19 इज लेस. और अगर अब हम ऐसे ही रैंडम नंबर्स लेते जाएंगे और हम देखेंगे क्या ये डिविजिबल बाय 19 है, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी गिरती जाएगी. हम देखेंगे देयर इज अ डिक्रीजिंग इन प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स बीइंग डिविजिबल बाय 19. So we see two things here. There is a Quranic significance to the number 19. Mathematical significance in a sense that it's a prime number, right? It's a prime number. Then its probability of it is also less. Then we go ahead with that. हम लेंगे same chapter, same surah हम लेंगे, which we have already discussed. सूर्य मुदस्सिर हम लेंगे वही, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 19 की क्या सिग्निफिकेंस इस सूरह में है, ताकि हम इस नंबर 19 को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए. आई होप माई वॉइस इज क्लियर नाउ. तो अगर हम देखेंगे इसी सूरत में द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द वर्स दैट डिस्कसेस द इम्प्लीकेशन ऑफ द नंबर 19, जो 31st वर्स है जहां पे हमें बोला गया था दिस नंबर जो है, नंबर ऑफ एंजल्स जो है, it is acts as a believers will increase in their faith. It only acts as a test for the disbelievers, so that the people of the book will be certain and the believers will increase in faith. इस वर्स में अगर हम देखेंगे इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें कितने आएंगे, सो इट वुड बी 57 वर्ड्स आएंगे. व्हाट इज 57? इज 57 a multiple of 19? Yes, it is a multiple of 19. It is 3 times 19 gives us 57, right? तो हमने ऑलरेडी देखा है कि कोई रैंडम नंबर अगर हम लेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो 19 होगा. इट इज ओनली 5%. 5% ही चांसेस है कि वो मल्टीपल होगा 19 का. एंड वी सी कि ऐसे ही हमने इस सूरत में देखा. तो हम देख रहे हैं देयर इज अ सिग्निफिकेंस. पहले ही हम एक नजर देख रहे हैं कि पहले ही हमें 57 वर्ड्स मिले, तो हम देख रहे हैं कि ये तो 19 से इट इज अ मल्टीपल ऑफ 19. तो एक बार हमने देखी थी प्रोबेबिलिटी तो इसकी लेकिन 5% है. ओके, लेट्स से कि इट हैपन, मे बी कोइंसिडेंटल. लेट्स सी क्या और कोई पैटर्न है 19 के रिलेटेड इसी सूरह में. द नंबर ऑफ वर्ड्स अप अंटिल द वर्स दैट मेंशन्स द नंबर 19. अगर हम इसी सूरत में देखेंगे हम वर्ड्स काउंट करेंगे पहले से उस वर्स तक जिस वर्स में ये नंबर 19 एक्चुअली मेंशन किया जाता है. द हेल वुड बी ओवरसीन बाय द 19 एंजल्स. उस वर्स तक अगर हम देखेंगे तो 95 वर्ड्स आ रहे हैं. अगेन 95 वर्ड्स. सो विल चेक, oh, is it divisible by, is it a multiple of 19? Yes, it is a multiple of 19. 5 times 19 gives us 95, right? So लेकिन हमने देखा था अगर हम कोई रैंडम नंबर लेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ मल्टीपल ऑफ 19 इज वुड बी क्वाइट लेस. अगर दो नंबर ले रहे हैं, एक बार हमने लिया तो इट वुड हैव बीन ओनली 5% चांसेस. अब हमने दो रैंडम नंबर्स लिए. इस सूरत में जो नंबर ऑफ वर्ड्स जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं until the verse that mentions the number 19, तो हम क्या देख रहे हैं कि it is there is again a significance.
कि इट्स अगेन अ मल्टीपल ऑफ 19। तो हमने क्या देखा था, देयर इज ओनली अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.2% चांसेस कि दो रैंडम नंबर्स हम लेंगे और दे वुड बी अ मल्टीपल ऑफ 19, देयर इज ओनली चांस ऑफ 0.2%। लेकिन हम एक ही सूरत में देख रहे हैं कि हमें मल्टीपल्स ऑफ 19 मिल रहे हैं और रिपीटेडली मिल रहे हैं जब हम उनको इस 19 के साथ अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसी के बाद हम तीसरा पैटर्न, rather the pattern is same, we will see तीसरा इंस्टेंस इसमें, the number of letters up until the word 19, जहाँ पे ये नंबर लेटर 19 मेंशन की गई है, तो हम देखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स वहां तक कितनी आ रही है। जहाँ पर ये वर्ड 19 मेंशन किया गया है, हम देखेंगे वहां तक की नंबर ऑफ लेटर्स कितनी आ रही है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स वहां तक पहले से स्टार्ट करके द नंबर ऑफ लेटर्स वहां तक आएंगे 360, 361 अगेन, it is a multiple of 19, it is divisible by 19. So the probability of number being divisible by 19 पहले ही एक बहुत कम थी। पहली बार तो 5% थी, दूसरी बार वो 0.2% थी, तीसरी बार वो 0.01% थी, राइट। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें रिपीटेडली नंबर डिविजिबल बाय 19 आ रहे हैं, मल्टीपल्स ऑफ 19 हमें मिल रहे हैं, व्हिच इज क्वाइट अस्टॉनिशिंग। लेकिन हम देखेंगे कुरानिक सिग्निफिकेंस तो हमने ऑलरेडी देखी थी कि देयर इज अ सिग्निफिकेंस, देयर इज समथिंग वी आर बीइंग ऑलरेडी टोल्ड ऑफ, and the believers will increase in faith. We have made their number only as a test for the disbelievers, so that the book will be certain, so that the people of the book will be certain, and the believers will increase in faith. So 19 की significance बढ़ती जा रही है, 19 के multiples हमें आती ही जा रही है एक ही सूरत में। Although probability of finding numbers being multiple of 19 is decreasing, and it is decreasing quite significantly. Again हम आगे देखेंगे। Let's pehli ek small question, if we have anybody. First, which were the first verses to be revealed on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Do we have anyone? It's a very basic question. किस सूरत की आयत पहले नाज़िल हुई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे? The first surah was Surah Isra. Not the surah, but मैं बस बोल रहा हूँ verses किसकी आई थी? There were 3 to 4 to 5 verses, I think, from Yeah, from right. that read in the name of Allah till that I taught you, which you didn't know till that, I think. Surah al-Alaq की first 5 जी verses, right? बिल्कुल जी सही, जी बिल्कुल right, exactly. So this is just to keep us going so that we are interacting. I would really encourage everybody to interact, right? So पहली हम अब 19 को और एक किसी सूरत में देखना चाहते हैं, किसी एक और सूरह में देखेंगे क्या 19 की सिग्निफिकेंस कंटिन्यूअसली आ रही है, क्या 19 का कोई पैटर्न बाकी सूरत में भी बन रहा है, क्या थ्रू आउट द कुरान 19 का पैटर्न बन रहा है, कि हम ऐसे ही बोलते हैं कि एक सूरत ली हमने और हमने बोल दिया कि इसमें पैटर्न आ रहा है। मे बी इट्स की वन सूरत एक ही सूरत में पैटर्न आ रहा है, लेकिन दैट्स नॉट द केस। ये पैटर्न हमें थ्रू आउट मिलेगा। फॉर द सेक फॉर एग्जाम्पल हम ये सूरत ले रहे हैं, this was the first revelation revealed to the prophet, known as the first 5 verses of Surah Al-Alaq. So इसमें भी अगर हम देखेंगे the number of letters in the first 5 verses वो कितनी आ रही है हमें 76 पहली 5 verses में हमें letters आ रही है, and again you be astonished, it is again a multiple of 19 into 4 gives the 76. This number 19 will get repeated across the Quran. इसके साथ आपको significance मिलती ही जाएगी if you sit down and start doing a bit of this calculation, या आप न्यूमेरिकल्स के साथ अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे कि is there a pattern, you will start finding patterns. Absolutely, you will start finding patterns which are maybe not known to people around you, which maybe you will not see in books also, because it is so frequently occurring. 19 के जो patterns हैं, they are not random, but they are so frequent. आप देखते ही जाएंगे कि there are patterns with number 19, and we see already कुरान में मेंशन किया गया है this has a number 19 has a significance. Then we saw this number 19 is unique. So what is this everything tell us? ये हमें कुछ बोल रहा है कि there is somebody जिसने ये किताब लिखी है, there is somebody who is divine behind. मतलब इतनी सारी चीजें रैंडमली तो नहीं हो सकती। एक किताब आई है 1400 years back, उसमें इतनी परफेक्टली चीजें कोडेड कैसे हैं? How is that number is
number is mentioned, 19 is mentioned in the Quran, फिर उसके related इतनी सारी coding कैसे हुई है? How is this even possible? एक humanly तो ये possible नहीं है. Then we may say maybe a technology कोई थी, but we all know we did not have this technology like 10-20 years back भी कोई ऐसी technology नहीं थी. Leave alone 1400 years back. So this everything tells us that there is something behind. There is somebody behind this. There is some divine force, right? Doesn't tell us that there is something divine behind this force. There is. Again, we see that number 19 to repeat होता ही जाएगा. The number of letters in the remaining verses 6 onwards. कितनी आएंगी? 209. It would be again a multiple. It would be divisible by 19. 209 is divisible by 19, right? So again, we are getting the multiples. Again, we are getting this, and this will go on happening throughout. The number of letters in all the verses in total. 285, again a multiple of 19. The number of verses in the surah itself, how many are there? 19 itself. And most broadly, जो हम देखते हैं कुरान में in itself there are 114 chapters, right? There are 114 chapters. And what is it? It is again a multiple of 19. It is divisible by 19. 6 times 19 gives us 140. So everything tells us it is pointing to one direction. There is somebody divine who has coded this. There is somebody divine. उसने अगर कोई number की significance बोल दी, throughout the book you will find the significance of this number 19 and repeated again and again and again in every surah. So this should fascinate us. This should at least tell us that there is something divine force behind it. This should encourage us कि हम और study करें, हम और जानें. Are there more patterns? Because to be honest, study तो ज़्यादा हुई ही नहीं है. We have not looked at Quran is through this prism. कि क्या यहाँ पे patterns है? थोड़ी बहुत जो research हुई है that has brought all this out. तो ऐसी research तो हुई नहीं है. So it gives us a light, it gives us an orientation basically. कि इस direction में भी we should learn about these things. We should learn about these things and we should research about these things. And the third thing, which is quite unique, although there are many other things which are unique, but we will just try to keep it short. There is another thing we have, the chapter verse matrix. Are we together, everybody? Am I audible clearly? Just to confirm. आवाज साफ आ रही है? Yes, sir, your voice is clear. Okay, great. Yes, sir. आप प्लीज, okay, great. Please, अगर आपको कहीं भी confusion हो रहा है तो आप प्लीज बोलिएगा, so that we stay together. We are all together on this, right? And my concepts, I am trying to keep them as simple as possible so that we don't feel overburdened by this. हम इसको maybe oversimplify भी कर सकते हैं एक हिसाब से, लेकिन that would take a lot of time. Then we have to go into the basics of everything, right? जैसे कि हम already probably जो मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद किसी को confusion हो रहा होगा probability का. What's probability? Then there would be a confusion of what's prime number. Then there would be a confusion of what is being a divisible of something, what is being a multiple of something. But those things are for the class. वो चीजें क्लास में डिस्कस की जाएगी. वो सारी चीजें ऑब्वियसली जो हम ये कोर्स करा रहे हैं उसमें डिस्कस की जाएंगी, सो दैट वी स्टार्ट फ्रॉम द फाउंडेशन, ताकि हम फाउंडेशन से स्टार्ट करें, हर किसी कॉन्सेप्ट को समझे. डिविजिबल का क्या मतलब है, मल्टीपल होने का क्या मतलब है, प्राइम नंबर की क्या सिग्निफिकेंस है, रेशो की क्या सिग्निफिकेंस है. अगर प्रोबेबिलिटी में बोल रहा हूँ 5% है, व्हाट डज इट मीन. देन आई एम सेइंग प्रोबेबिलिटी 0.2%, व्हाट डज इट मीन. देन आई एम सेइंग प्रोबेबिलिटी 0.01%, व्हाट डज इट मीन. नाउ लेकिन इतना डिग डीप तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं. प्रोबेबली कुछ लोगों को लग रहा होगा कि वी आर गोइंग maybe fast on this, but we cannot take every concept individually and discuss it, because we would be then spending a lot of time with this. So what I am doing is I am trying to touch every concept. Just एक ब्रश अप ले रहा हूँ मैं हर किसी कॉन्सेप्ट का, हर किसी कॉन्सेप्ट को मैं ऊपर ऊपर से टच कर रहा हूँ. जो डिटेल्स है दैट फॉर द क्लास, वो क्लास में डिस्कस की जाएंगी. एक हर किसी डिटेल को ब्रेक किया जाएगा, और till everybody doesn't understand it, we cannot go ahead with it. So yeah, let's continue with it. The chapter verse matrix. What does the chapter verse matrix say? Surah Al-Fajr की जब हम कहते हैं third verse, तो it says Allah swears by the even and the odd. So whenever Allah swears by something, so it has a significance obviously. Allah किसी चीज से swear करता है तो कसम खाता है किसी चीज की, तो इसकी कोई ना कोई significance तो होगी. So this even and odd क्या है?
even and odd अगर mathematically हम देखें parity, so it's a jargon used for in mathematical terms, parity. Parity is something जो हमें स्ट्रक्चर ऑफ द कुरान में भी देखेंगे हम आगे, और मैथमेटिकल टर्म्स में भी पैरिटी का बेसिक मतलब तो यही है इवन एंड ऑड का होना, राइट? बस इतना ही मतलब हम अभी के लिए रख लेंगे। तो हम इसमें देखेंगे व्हाट इज दिस चैप्टर वर्स मैट्रिक्स। चैप्टर वर्स मैट्रिक्स क्या है कुरान में? सो लेट्स गो अहेड विद दिस। या सो हम क्या करेंगे, हम लेंगे नंबर ऑफ सम ऑफ सूरा। पहली तो हम लेंगे सूरा नंबर्स क्या है हमारे 1 2 3 एंड इट विल गो अप टू द 114। जो हमारे 114 सूरा है हम उनको लेंगे एक कॉलम में। दूसरे में हम लेंगे नंबर ऑफ वर्सेस, जैसे कि पहली सूरत अल फातिहा उसमें 7 वर्सेस, सूरह बकरा 286 वर्सेस। ऐसे ही हम हर किसी के वर्सेस भी ले रहे हैं, नंबर ऑफ वर्सेस 7 286 200। वैसे ही सूरा नंबर जो हमारा 14 लास्ट सूरा आता है उसकी नंबर ऑफ वर्सेस 6। सो वी कीप देम लाइक दिस। यहाँ तक तो हो गया। अब हम देखेंगे सूरा चैप्टर वर्स मैट्रिक्स है क्या। सो व्हाट वी विल डू इज चैप्टर वर्स मैट्रिक्स में पहले तो हम सम करेंगे सूरा नंबर और नंबर ऑफ वर्सेस को, इनको हम सम करेंगे, राइट? So we get 8, 1 plus 7 is 8, 2 plus 286 is 288. So we get this column, a new column of chapter verse sum, right? ये हमें मिल रहा है chapter verse sum। यहाँ पे हमें sum मिल रहा है सूरा नंबर का और वर्स नंबर का। अगेन हम क्या करेंगे, हम इनको even और odd में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कुछ even होंगे, कुछ odd होंगे। 8, 288, 180, these are even. And guess what? The number of even surahs and the number of odd surahs are exactly equal, right? How many are they? 57 odd and 57 even. पहली तो ये चीज फैसिनेट करने वाली है। Allah swears by the even and odd, right? And we see that number of surah and the number of verses का एडिशन हम जब देखेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर हम देखते हैं even कितने हैं, odd कितने हैं। They come out in parity. They come out equal. They come out 57 are odd, 57 are even. Well, this पहली तो ये चीज फैसिनेट करती है, इक्वल नंबर ऑफ इवन होना, इक्वल नंबर ऑफ ऑड होना। Well, maybe not that much fascinating. We'll go ahead with it. We will go ahead with the numerical calculation. What would we see? We see some of the surah numbers हम देखेंगे। जो surah numbers हमने लिए हैं इन सबको हम ऐड करेंगे। We will add them up 1 2 3 4. We will add them up. What is the sum we get? 6,555. Similarly, we will sum the verse numbers 7 286 200 176 176 200 165 206। हम इन सब का सम लेंगे फिर से। And what do we get? We get 6,236 again this, right? We get these numbers. So यहाँ तक तो एक हम देख रहे हैं। So as of now we are not getting any pattern other than 57 odd है, 57 even है, equal numbers, right? 57 57 we get 114, right? लेकिन अगर हम अब अलग चीज करेंगे, हम ले रहे हैं जो हमारे सम ऑफ ऑड रिजल्ट्स जो हमें निकले थे यहाँ से, ऑड रिजल्ट्स जो हमें निकले थे, ऑड रिजल्ट्स which are odd. What are the odd results? 203 125 171 213 15 130, right? 100, yeah, these are all even, but we sum all the odd results। जिनका हम सम कर रहे हैं, ऑड रिजल्ट्स का सम हम कर रहे हैं। व्हाट डू वी गेट? 6555। कुछ कुछ रिलेशन लग रही है, किसी चीज के साथ रिलेशन लग रही है हमें यहाँ पे, कोई पैटर्न बन रहा है। डू वी गेट अ पैटर्न समबडी? कोई पैटर्न हमें इसमें आ रहा है? डू वी सी देयर अ पैटर्न अगर हमें ये सम आ रहा है 6555? Yes, sir. Sum of surah numbers and sum of odd results are Exactly, same. odd result. Exactly, these two are same, right? ये दो तो सेम आ गए। Well, this is astonishing. To keep it there, it is fascinating because these are additions of small clusters of addition। जब हम कर रहे हैं सूरा नंबर और वर्स नंबर को, इन सबको एडिशन करके हमें एक वर्स नंबर चैप्टर वर्स सम आ गया था। इनको हमने ऑड और इवन में डिवाइड किया, फिर हम ऑड का अलग सम कर रहे हैं, इवन का अलग सम कर रहे हैं। ऑड का जब हमने सम किया तो इट केम एग्जैक्टली द सेम एज द सम ऑफ द सूरा नंबर्स। लेट्स लीव इतना तो अच्छा है। अब आगे जाते हैं, सम ऑफ इवन रिजल्ट्स। ये जो इवन रिजल्ट्स आ गए 57, इनका सम करेंगे। व्हाट डज इट कम आउट?
6236. Again, there's a relation. These are two equals, right? 6555, which is the sum of odd results, is equal to the sum of surah numbers. And the sum of even results we have here is equal to the sum of verse numbers. Fascinating. This is how it is coded. This is how this information is packed. This is how this information is tightened. We say it's a watertight information. This is a preserved information. This is coded. This is in a pattern, right? अब हम इसको पैटर्न या कुछ भी कह दें, we need to see it कि क्या is there a something that makes it significant. अब मैं तो बोल रहा हूँ ये significant है. Is it significant? But yeah, it is significant. Why? Because we have something similar. We have in computer sciences. We have a concept of checksum. What does this checksum do? Well, this checksum does a lot of things for us. It gives us a preservation of information के बारे में हमें बोलता है. If there is a preservation in information, we will get the checksum. If there is no preservation in the information, we will not get this checksum, right? Well, basically, it's sort of a mathematical calculation which is applied for the data, and it produces what we call it. We call it a signature. We get a signature that can be later checked, right? If the signature remains the same, the data is intact. Then let's see what this checksum actually means. Consider मैं कोई information pass कर रहा हूँ. It's a sort of a lock and key की तरह ये काम कर रहा है. अगर मेरे पास lock है, अगर मेरे पास उसी lock की key है, then it will be able to open that, right? मेरे पास एक key है. How do I check कि इसी lock की है? I'll try to put it inside and I'll try to open it. अगर इसने open इसको किया तो बिल्कुल ये ताला और चाबी they're together, right? If it is not able to open it up, then these are not too compatible. ये एक अलग-अलग चाबी ताला है, right? This is what checksum does. अगर कोई information आ रही है, हम इस information का एक numerical data लेते हैं और हम उसको ऐड करते हैं. तो हम ऐड करके देखते हैं क्या ये एडिशन उसी बराबर आ रहा था जिस टाइम ये हमने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई information निकली और यहाँ पे जा रही है. यहाँ पे हमारा checksum है. से कंसिडर हमारी यहाँ पे information निकली कि इसका checksum था 67. ये ट्रैवल कर रही है यहाँ से यहाँ तक. दिस पर्सन ऑलरेडी नोज कि checksum इस इंफॉर्मेशन का जो मेरे पास आने वाला है वो 67 है. इसके पास इंफॉर्मेशन आ गई. He tries to check this information and he sees the checksum of this information, the numerical जो addition of this information जो इसने डेटा लिया है, इसको जो कैलकुलेट कर रहा है ये, इसको checksum 67 आ रहा है. He'll say yes, this information is correct. I'm getting the checksum. So this information is correct, guys. But in case the checksum हमें बराबर नहीं आ रहा है, this information being transmitted from point A to point B, the checksum is not equal to 67. He says the checksum is 68, guys. So what do we conclude? There is something that has happened in between. Something fishy has happened in between. There is not the preservation of information. Preservation of information नहीं हुई है. Similar is the case here. ये जो इक्वल हमें आ रहे हैं, it shows there is a preservation of information. 1400 years back भी ये इक्वल था और आज भी ये इक्वल ही है. It shows there is a checksum. There is, if we do this checksum, 1400 years back हमने ये checksum किया होगा, it would be exactly the same जैसा आज है. It would have been, हम बोल सकते हैं, if we check the preservation, if there was any distortion, maybe the checksum would have changed. But no, the checksum remains there. It is the same. It shows as the same word again and again. 6555 was then, and it's still same for the sum of odd results. Sum of verses numbers is 6236, and the sum of the even results is 6236. It's again the same. It shows there is a checksum. It shows there is a preservation of information. It shows the number of verses that were in the Quran 1400 years back is same. Because अगर आप यहाँ पे एक चीज change करें, consider this for an example 6. So this all will be distorted. The checks and balance would be distorted. Is everybody understanding this concept? How beautiful this concept is? This is a very beautiful concept. ये हमें सच में एक preservation of information दिखा रहा है. कि the information that is being transmitted for the 1400 years is exactly the same. There has not been an addition or deletion of a single word.
Nothing added, nothing subtracted. The information remains as it was. Right, guys? So this should give us an idea that the information is being preserved, the information remains as it was. And now there may be there is always a question of that all this information is coincidental. Well, we may say that information is coincidental at times, then coincidental information होने के लिए एक चीज होती है कि ये coincidentally information repeat इतनी बार नहीं होती. You see, it is repeated over and again. There is a numerical pattern in the Quran which may be related to 19. आप देखेंगे 19 का pattern repeat होते ही जा रहा है. You will see पहला pattern जो हमने पढ़ा कि opposite words equal number of times being mentioned. ये pattern आपको मिल रहा है. checksum का ये आपको मिल रहा है ये pattern. So जो चीज coincidentally होती है, it can happen 1 or 2 times. It cannot happen repeated number of times. So this argument of being coincidental is not valid. Then we have another argument. Maybe somebody would argue that the author of the book, probably he did it intentionally. He wanted this checksum there. He wanted this word balance there. He wanted this sum there. Consider, एक मिनट क्या हम बोलते हैं, चलो तुम्हारी एग्जाम्पल ले ली हमने. The author of the book wanted checksum भी होना. He wanted word balance भी होना. He wanted number 19 की significance भी होना. But there is a question. अगर वो चाहता था ये सारी चीजें होना, then why did he not advertise these things 1400 years back? अगर मैं कोई चीज कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोई चीज, if he had to attract the audience because of the book, and और ये बोल रहा था कि मैं कोई information ऐसे preserve करूँ ताकि इसमें एक पैटर्न भी आ जाए, तो फिर ये पैटर्न जब लोगों के सामने आ गया था तब ये तो एडवर्टाइज किया गया होता कि look, there is a checksum in this book, there is a pattern in this book, there is a word balance in this book. But no, it was not advertised 1400 years back. If it was a deliberate attempt, it would have been advertised. But it was not advertised. It was just that we began to discover these patterns. हम अब देख रहे हैं ये pattern. So both the logic, both the arguments that it's a coincidental is obviously wrong. Then calling it that it was done deliberately is also wrong. But then it would have been advertised. But it was never advertised. We are seeing this pattern only after 1400 years or 1300 years. हम इस pattern को देख रहे हैं. We did not research on these patterns. या इन patterns को advertise भी नहीं किया गया. So there is something divine behind this book. So that divine, somebody who does not believe in God, that person should ponder over it. Who is this person behind this book? अगर वो एक mathematical lens के through ही देखे कुरान को, तो he should see there is something divine in this book. These patterns, these codes, how are these possible? How is this checksum possible? For 1400 years back, we still have this checksum the same. These chapter verse matrix, how is this possible? This 19 number being mentioned and then being given a significance in the Quran. And then we see this pattern repeating across the Quran. It shows there is something divine behind the book. What is that behind? We know it. It's Allah behind this book. Right? So this all, up to this point of, it was to create a sense of curiosity that there are patterns, mathematical patterns within the Quran that we are not familiar with, that we should be familiar with, and there is a lot of research to be done. There's a lot of research to be done in this field that we make, and जब तक हम उन स्टूडेंट को एक नए स्टूडेंट ऑफ नॉलेज को इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं कराएंगे, तब तक इस डायरेक्शन में रिसर्च होगी भी नहीं, इन चीज़ों के बारे में जाना भी नहीं जाएगा. बट इट इज फैसिनेटिंग. मे बी अ पर्सन ऑफ साइंस जिसको मैथमेटिकल इंक्लिनेशन होगी, प्रोबेबली उसको ये चीज फैसिनेट करेगी और उसके लिए ही एक जरिया बनेगा दीन की तरफ आने का. दिस कुड बी द रीजन, राइट? बट वी हैव टू टेक स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन. Well, from this onwards, we will see basically यहाँ तक तो हमने एक कुरान शरीफ के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की, was are there patterns, और मैंने जो पैटर्न्स लिए थे they were strictly the patterns were of what nature? They were precisely of the nature of numeric theme की significance, right? ऐसे ही मैं आपको और एक significance बोल सकता हूँ कि जो ऐसी याद आ गई मुझे, the number of times
sea being mentioned in Quran is 32 times. And the number of times land being mentioned is 13 times. And if you see this ratio is quite familiar. अगर आप इस ratio को देखेंगे, it is again, you can just say, sorry, it is 71 is to 29. It is the same ratio. If you multiply this by 3, if you multiply this by, if you, yeah, the sea and the land is being mentioned 32 times. Sea is mentioned 32 times, land is mentioned 13 times. But then you see the ratio of, what do we have the ratio of? Sea and land, it is 71 is to 29. So it's the same ratio again. अगर आप ये वाला ratio और ये वाला ratio लेंगे, the same. Hello? Am I audible? Yes, I'm audible? sir, you are completely audible, sir. Yeah, sorry. Yes, sir, you are It started. audible, sir. Okay, thank you so much. Yeah, yeah. So अगर हम देखेंगे इनका ratio भी same ही आएगा. So which is again a fascinating thing. Then we go on with what is mathematics and what is the Islamic perspective on this mathematics. So we see कि जो scholars of Islam have been, they have been quite fascinated. They have been intrigued by the knowledge of Quran. We see obviously the basic introduction to mathematics. Everybody would know it's a study of numbers, shapes, and sorry, this is the slide. Mathematics is a study of numbers, shapes, and patterns. And in Islamic thought, it's not just an academic subject. ये एक खाली academic subject नहीं है, but it gives us a way to understand Allah's creation, right? The universe operates in an orderly and predictable manner. हमें reflect कराती है उसकी ओर. There is something divine in it. By studying, when you study math, we are not just able to understand the world better, but we do also recognize the wisdom. There's a wisdom behind all this. We understand there is a vast wisdom of the creator all this behind it. And एक Islamic perspective से देखेंगे तो एक Islam encourages us learning and pursuing knowledge. अगर आप कोई चीज contribute कर रहे हैं लोगों की तरफ, I say this again, I said it last time, I guess, that the contribution of Edison, अगर हम देखेंगे, the contribution of the significant contribution of bulb, तो consider this as a Muslim scientist who gave a bulb to this world. तो ये तो सबके जारिया रह रहा है. Everybody is using it for the good purpose. Everybody is using it. Throughout the world is using it. अगर आप यही एक invention मुसलमान scientist करेगा, तो कितनी नेकियां उसको मिलेंगी for this invention? If he has the right intention, if he has the heart, he thinks like Muslim, then this can be a satya jariya for him, right? And we're talking about the fields of mathematical study. There are vast number. Well, mathematical field में अगर हम देखेंगे, Muslim scholars अगर हम देखेंगे, उनने कुछ fields में ज़्यादा study की है. For example, algebra, geometry, astronomy, number theory, and algorithms. I'll be जो हम डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्री तो मैं यहाँ पे डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन आई गॉट एन एग्जांपल. कैन यू टेल मी इस्लामिक लिटरेचर आर्किटेक्चर जो है या मुस्लिम आर्किटेक्चर जो है, इट इज यूनिक, इट इज कंसिडर्ड वेरी ब्यूटीफुल, राइट? कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई इज इट कंसिडर्ड सो ब्यूटीफुल? या रीजन भी नहीं बोलेंगे आप मुझे बोले कि व्हाट मेक्स इट सो यूनिक फ्रॉम अदर्स? एनीवन? आपको क्या लगता है मुस्लिम आर्किटेक्चर में कौन सी चीज है जो उसको यूनिक बनाती है दूसरों से? एंड मुस्लिम आर्किटेक्चर इज लाउड अक्रॉस द वर्ल्ड. दिस इस्लामिक आर्किटेक्चर, व्हाट डू यू थिंक, कौन सी चीज को यूनिक बनाती है? व्हाट मेक्स इट डिस्टिंक्ट? एनीवन? जस्ट अ रैंडम थॉट. आपको क्या लगता है, व्हाट मेक्स इट यूनिक? एनीवन? So maybe geometry inspired by the verses that you're marking in there. Geometry inspired by the verses. Okay. Yeah. Well, geometry inspired by, yeah, this is almost right. Well, there's more to it. Can we go ahead?
let's think more. There is something more which is unique Islamic architecture में और बाकी architecture में. Something unique in Islamic architecture. Let's think. You have answered correctly. Your answer is valid. But हम और देखेंगे कुछ unique और भी है. Anybody? कुछ भी आप बस idea ले लो. It can be a guess. You think of it. It is your opinion. It may be right or wrong. That's not an issue. But let's see if we have anything in our. If we do have an opinion on this. What do you think Islamic Muslim architecture or the rest of the architecture में फर्क रही है? Well, let's see one thing. The architecture जो rest of the world का रहा है और जो Muslim architecture रहा है, you will see rest of the architecture जो है ना, rest of the world का architecture उसमें idols बहुत बनाए जाते हैं. You will see idols everywhere. कोई भी architecture उसमें idols बनाए गए होंगे. Right? मूर्तियां बनाई गई होंगी. Be it anywhere except Islamic architecture. You will not see any Islamic architecture जिसमें idols बनाए गए होंगे. For sure. Why? Because making idols is haram. Right? We cannot make idols. उस चीज में this prohibition जो ये prohibition बनाना कि idols नहीं बना सकते, इसने मुस्लिम आर्किटेक्ट्स की एक सोच ही तब्दील कर दी. बिकॉज दे वर रेस्ट्रिक्टेड, दे कैन नॉट गो इनटू दिस फील्ड. वो आइडल्स नहीं बना सकते आर्किटेक्चर में, उनके आर्किटेक्चर में आइडल्स नहीं हो सकते. सो व्हाट डिड दे डू? दे फाउंड आउट हमें भी खूबसूरत आर्किटेक्चर बनाना है, बट दे वेंट फॉर डिफरेंट थिंग्स. दे वेंट फॉर प्रोबब्ली कैलीग्राफी, राइट? दे वेंट फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. द डोम स्ट्रक्चर ऑफ मुस्लिम्स यू सी द ऑटोमन्स के टाइम पे जो एक राइज पे आ गया यार. सो इट वाज क्वाइट यूनिक. रेस्ट्रिक्शन जो हमें मुस्लिम्स पे की थ्रू इस्लाम कि हम आइडल्स को नहीं बना सकते. Look how it became an opportunity to make the architecture of Islam and architecture of Muslims quite unique to the world. You will see the Muslim architecture is loved across the world. It is because of this restriction जो हमें मिली थी that we cannot make idols. जब idols नहीं बना सकते तो because everybody जो भी architecture में था he would make idols to make the architecture beautiful. Go 600-700 years back, you will see all the architecture, there would be some sort of idol. But the Muslim architecture is unique in this sense. You will not find idols. It keeps it distinct, it keeps it beautiful, right? So the restriction also became an opportunity, right? So different fields, different for them. And throughout, you will see that historically, the contributions have been made by the Muslims in this regard, right? It has been throughout, you will see Muslims have contributed to the fields of science. They have contributed to the field of mathematics. Here I have noted few of these. Al-Khwarizmi, how much he contributed to the field of mathematics, right? His contribution is significant. His contribution to this field. Jabir bin Hayy, his contribution, right? Nizamuddin Tusi, his contribution, Ibn Sina, all these contributions, we cannot just deny them. Their contribution to be it mathematics, be it science, be some have been contributing to the field of medicine. Their contribution is immense. So, but of late, there have been now centuries, and we don't find Muslim scientists, a lot of Muslim scientists. There was a decline. The Renaissance that occurred in the Europe, the fuel for that Renaissance was जो एक अरब वर्ल्ड में, द मुस्लिम वर्ल्ड में जो लिटरेचर था, जो बगदाद एक लिटरेचर हब था, जो बगदाद से में लिटरेचर बना हुआ था, दैट वाज एक्टिंग एज अ फ्यूल टू द रेनेसांस फॉर दिस यूरोप. क्योंकि वहां से स्टूडेंट्स आ रहे थे, वो बगदाद में पढ़ते थे. यहाँ से लिटरेचर जा रहा था जो कि जिसकी ट्रांसलेशन हो रही थी यूरोप में. हमारे लिटरेचर की ट्रांसलेशन हो रही थी. नाउ थिंक ऑफ दिस, द ऑपोजिट इज हैपनिंग नाउ, राइट? हमारा लिटरेचर भी नहीं है, हम सब कुछ वहीं से ले रहे हैं. एंड इट्स अ गुड थिंग, वी शुड टेक, बट वी शुड टेक इट कंस्ट्रक्टिवली. we should have an aim कि we also go up. It should not be just translation बस हो रही है, हम पढ़ नहीं रहे हैं. There is no purpose of taking this literature, and we are not moving forward. It's good that we take the literature because it's after the end of the day, it's a knowledge. We should take it, but there should be constructive also. We cannot just be. Then I have taken few examples
like Al-Rizli. Contribution immense. Well, he is called as the father of algebra, right? He lived in the 9th century. His book Kitab al-Jabr wal Muqabala, it laid the foundation for the algebra and was used in the universities of Europe. Imagine that. Al-Khwarizmi, a Muslim scientist whose books were used in Europe. Well, it seems like impossible. इस वक्त तो इंसान सोच भी नहीं सकता है किसी मुसलमान साइंटिस्ट की किताबें यूरोप में पढ़ाई जाएंगी, right? And it was quite common those days. And he did not only contribute in this mathematics, his contribution is in astronomy, his contribution is in geography. He showed his diverse skills in various fields. And there's a quote of Al-Khwarizmi, I cannot recall it exactly, but he says that his contribution is in an act of worship because ये सारी चीजें लोग इस्तेमाल करेंगे जो इसने contribute किया है, लोग इस्तेमाल करेंगे, and so people will be benefited of this knowledge of it. So it is a worship. अगर लोगों की मदद हो रही है तो it is a great thing, right? So after this, I have taken another scientist, which is Habsha al-Mawazi. He was a Persian Muslim astronomer, geographer, and a mathematician. And his contribution lies in the field of, like he described the trigonometric ratios. We have sine and cosine. For the first time, he did describe these, and he estimated time like using altitude and conducted astronomical observations. And guess what? Where he was doing these all astronomical observations? He was doing all these astronomical observations in Baghdad. Well, it seems quite odd. Once upon a time, we think the Muslim civilization was at its peak. Baghdad में research हो रही थी. It feels like this is not true. Because इस वक्त हम देखते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में कोई रिसर्च नहीं हो रही है. The whole research happens in the West. It happens in Europe. It happens in America. We don't do any research now. But there was a time when these astronomical observations, when these estimates were being done in the Baghdad. Baghdad was the hub of the literature. It was the hub of these science. And his work helped in precise calculation, it helped in navigation, it helped in observe that we have particular fixed time for prayers. So his calculation helped us to calculate those times. कौन से time है prayer का. And then the third one I have taken is Al-Jayani. Precisely I have taken this because he's a Maliki judge. One of the jurist students, one of the school of thoughts we have is the Hanafi, Maliki, Shafi, Hanbali. One of them is Maliki. So he was a Maliki judge, but he was a mathematician also. Sir, please, sorry for interrupting. Voice फिर से clear नहीं आ रही. Okay. I don't know. Problem. Yeah. Again, this should be fine now. So Al-Jayani wrote some important commentaries, like on Euclid's Elements, and he wrote the first known treatise on spherical geometry. He had a strong influence on European mathematicians also. So the European mathematicians took the knowledge from him. So they were quite interested in taking knowledge from him. Seems quite rare now. कि एक मुसलमान scientist is influencing people from the different parts of the world, right? Now we move to the next slide and we see till this point we have seen few things. One, we saw the mathematics at the perspective of Qur'an. Then the second perspective we saw is the contribution of Muslim scientists. I just tried to give you a brief overlook so that you have an idea that yes, Muslims have contributed. There have been Muslim scientists who have contributed to the field of mathematics, be it astronomy, be it geometry, be it ecosystem. Right. So there's been influence. Have there been an influence? Yes. We have seen that there has been the influence of Quran directly influenced the mathematical thinking throughout the history of Muslims. And we know that the Quran says in I'm not able to. Yeah, the Quran says in it's Surah 50 and verse 6, which says that do they not look at the sky above them and how we have built and adorned it. So you see that it inspires the believers to study the universe order. It inspires them to understand the symmetry, right? It just infuses this
curiosity of knowledge that the Muslims should be after. And Muslim scholars interpreted these as divine patterns, as divine encouragements that Muslims should look after these things. And this they use different fields. And that's why they were successful. इसलिए उन्होंने contribute किया है in different research, right? In the contemporary times, we will see that obviously the contribution is immense. Muslims have contributed to the mathematics in the field, be it astronomy again, be it geometry again. This is intense. And the study of ratios like 1 is to 2 is to 3, we will see this example of ratios across Quran also. The examples of ratio like man and woman, which occur the equal number of times, 24 times each. So it also has some significance, both being mentioned equal number of times, right? So the case studies and contemporary research, there is a vast field for it. Muslims should pursue this field, Muslims should pursue this field, Muslims should pursue this field, so that we are able to contribute more and more, so that we create a space for ourselves, so that we study Quran and we see there are patterns, right? We should contribute to the new research. And to the contemporary knowledge, we have contributed, but it is time to contribute more. It is time that we have been lagging for centuries and centuries. We have not been able to, right, like contribute a lot for the last couple of centuries. And then let's move on to the impact on modern mathematics. Impact on modern mathematics is quite significant, right? We have had lasting influence on the modern mathematics. Like we already discussed the algebra, for instance. It was developed by Al-Khwarizmi from his book, what we call that, Al-Kitab al-Mukhtasar, right? This book work introduced systematic ways to solve the equation and form the foundation of what we call now the modern algebra, which is used globally today. But the foundation of it was laid way back. So we have contributed to the modern mathematics also, right? And geometry, which is another critical field, was advanced significantly by Islamic mathematics, as we have already had a bit of an insight on it, especially for religious purposes also. For example, geometry, we use geometry, for example, in determining the Qibla, right? We have to determine the Qibla. We offer the prayer in the direction of the Qibla or the Islamic architecture. So Muslims have contributed in these fields and have contributed fields heavily. So at last, I would like to just put a notice on this point. I would just try to elaborate on this point is that in this course, we would like to start from the very basic. It will be divided into 4 semesters. The first semester would be quite, I will keep it very basic so that we get into every detail. We try to understand every detail. A kid of 5th or 6th standard is able to understand it. हर कोई बच्चा 5वीं जमात का हो, 6ठी जमात का हो, वो understand करे. एक easy language में उसको समझाया जाए. We will use not only एक जो pen and paper का model होता है, but we'll use advanced models also. जो 3D animations है, उनको भी हम integrate करेंगे. We will use the model of integration, not exclusion. Pen and paper को side पे नहीं रखा जाएगा, but we will use these 3D models along with pen and paper, so that a person is able to understand the details of every concept, right? After the first semester, which would be quite basic, then we will move to, which would not be that basic, but yeah, we will start it from the scratch, so that everybody is able to grasp the concepts, and then the level would go on increasing with every semester, right? Which would be of 4 semesters. So yeah, and we will induce a critical thinking in every subject, every student, a critical aspect of every knowledge, an Islamic aspect of every knowledge, a Quranic aspect of every knowledge. Every knowledge has some aspect if we look at it through the prism of Quran. So we will try to do that also, and hopefully we will have a good action in those, and we will go ahead with it. So I guess I have completed this orientation session. Thank you for listening patiently and here connected with me. And so if anybody has any questions, you can please go ahead. Rest, we have finished orientation session of this. Do we have anybody here who would like to ask anything? Give me a moment. I would like to sum it up.
researching for such fascinations in Quran. Is it possible that Muslim researchers or scholars in future? Can you please repeat yourself? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है. I'm extremely sorry first up कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारों ने मैसेज की है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही. I'm extremely sorry but I had already used headphones. मैं headphones ही यूज कर रहा था and I have no idea कि क्या मसला आ रहा था. I'm extremely sorry. Yeah, please go ahead. I have a question that if we continue researching for such fascinations in Quran, as you already mentioned, is it possible that Muslim researchers, scholars in future will bring forward the concepts or interpretations or the patterns in Quran that are not pertaining presently in the world of I couldn't understand the last part. मैंने ये तो सुना कि आप बोल रही हैं कि if we do the research in this field, but what was the question at the end? The voice is not clear. तो मैं बता रही हूँ कि अगर हम रिसर्च करें ऐसी फैसिनेशंस पर कुरान में, क्या पॉसिबल है कि मुस्लिम रिसर्चर्स स्कॉलर्स मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में ऐसे पैटर्न्स लाए, ऐसे कॉन्सेप्ट्स लाए जो प्रेजेंटली नहीं है मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में? Obviously, जो भी रिसर्च की जाती है, the main motive of the research is कि हम कुछ ऐसा लाएं जो which is not presently available. So obviously, when we do research in these fields, so we will come up with something which is not presently available. The aim of the research है ही वही, और the aim of the knowledge should be कि हम कुछ ऐसा लाएं which is नया, which is not already being fed to us, something new. So yeah, definitely. So yeah, any other person wants to ask anything, I'd be glad to answer it. जी सर. सर आपने 19 नंबर का बताया ना? Yeah. उस स्लाइड में आपने लिखा कि it strength the faith in believers. सर how आप elaborate करेंगे इसको? Yeah. How does it? देखिए, अगर आप उस वर्स को देखेंगे और आप देखिए मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो 19 के पैटर्न्स बहुत सारे बन रहे हैं. मैं आपको मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव ही बोलूंगा इसका, राइट? अगर आप ये खाली मैथमेटिक्स के एंगल से देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितने सारे पैटर्न्स बनते हैं. 19 के रिलेटेड जो मैंने आपको एक सूरा में दिखाया पैटर्न बन रहा था, राइट? लेकिन इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू खाली एक सूरा. अगर आप देखते जाएंगे, आप आई वुड नॉट encourage कि आप YouTube वीडियोस देखें, क्योंकि YouTube वीडियोस आर क्वाइट एट टाइम्स दे आर नॉट राइट नॉलेज नहीं होती है. बट इफ यू रीड बुक्स यू विल सी कि नंबर 19 के रिलेटेड कितने पैटर्न्स है. when you read those patterns, when you go through these patterns, तो आप देखते हैं कि सच में if you are a believer, आपकी नॉलेज में सच में नॉलेज छोड़िए, आप सच में मुतमईन होते हैं कि this is a divine book, this is not the book of any common man. एक इंसान की लिखी हुई किताब तो है ही नहीं, एक आम इंसान की तो किताब ही नहीं है ये. It is definitely a divine book. So definitely इस नंबर से बिल्कुल एक बिलीवर पे अगर आप मैथमेटिकल एस्पेक्ट से देखेंगे जो कि हम देख रहे हैं, बिल्कुल एक ईमान तो इंक्रीज कर लेता है एक मुसलमान का. आप आई वुड एनकरेज कि आप बुक्स पढ़ें विच आर क्वाइट गुड. देयर आर वेरियस बुक्स जो लिखी गई हैं जो नंबर 19 पे डिस्कशन करती है. इंशाल्लाह हम भी when we go through our classes we will discuss on number 19 a lot, because ये time and again आप देखेंगे कि कुरान में जहाँ पे भी आप देखेंगे नंबर 19 के पैटर्न्स आएंगे. सो इट क्लियरली शोज कि इसकी एक सिग्निफिकेंस है नंबर 19 की, और एक वंस यू आर अ बिलीवर इसका एक इंप्रेशन लॉन्ग लास्टिंग है, एक और इसका इंप्रेशन आप पे ज्यादा गहरा पड़ता है. सो या डेफिनेटली इसका तो एक ये एस्पेक्ट बिल्कुल है बिलीवर्स पे. Any other person wants to ask anything? So यहाँ पे कोई है जो which is of the age like 13, 14, 15, 16? I would be interested to know अगर उस एज का कोई यहाँ पे, because वो एज ग्रुप होता है तो these things fascinate them more. And if you will see कि मैंने मेरा font of जो presentation था, it is quite I made it attractive for the kids. So I thought if in case we have any kid here that may be attractive to it more to its representation.
or these numbers, numeric numbers, these do fascinate kids a lot more. So that was precisely, that's why I asked if we have anybody here. Anybody else? Any questions? I would really appreciate that. I guess we are done with the session. Guess we can call it a day. Yeah, thank you so much. I guess we have completed this session. Thank you everyone for joining. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum assalam wa rahmatullah.